We will start in 2 minutes. Because before we start, please tell me if my voice is clear. Okay, let's focus on the topic today, not on my face. But yes, is my voice is clear? Yes or no? Okay, guys, give me a thumbs up if my voice is clear. Okay, let's begin. कोई अंश देखते हैं टाइम से थोड़ा भी तेज हो जाएगी. As the topic says, speed, time and distance. आपकी स्पीड जो होती है वो आपके किलोमीटर पर आवर में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी. बहुत रेयरली आपके क्वेश्चंस आते हैं माइल्स पर आवर. तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिलहाल मिलेंगे नहीं, और अगर मिलते हैं तो वी विल सॉल्व इट. टाइम होता है आपका आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स में. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दैट we have to take care of the units, which means if the unit of time is in second, then the unit of distance must be in meters, because speed is in meter per second. If the unit of time is in hour, distance should be in kilometer, because the speed unit is kilometer per hour. If you want to convert meter per second into kilometer per hour, multiply by 18 upon 5. And if you want to convert kilometer per hour into meter per second, we multiply by 5 by 18. इसको याद कैसे रखना? सी, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, इसलिए बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे. किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है,
बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, इसलिए छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी नीचे। ठीक है। ओके। नाउ while doing the questions we will come around the concept of relative speed क्या होती है, let's try to understand. See, एक पर्सन, व्हीकल और एनी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इधर से आ रहा है, लेट्स से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, लेट्स से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, दिस इज योर सिनेरियो वन। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, एक बॉडी इधर जा रही है x किलोमीटर पर आवर, एक बॉडी इधर जा रही है y किलोमीटर पर आवर। थर्ड सिनेरियो, दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। तो अगर मुझसे कोई रिलेटिव स्पीड पूछेगा, पहले केस में इट विल बी x प्लस वाई, सेकेंड केस में इट विल बी x प्लस वाई, थर्ड केस में इट विल बी x डिफरेंट y। सो जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है दोनों बॉडीज की स्पीड का डिफरेंस। और जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, मतलब दोनों बॉडीज की स्पीड को ऐड कर दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब तक जितना बताया वो समझ में आया? Guys, if yes, give me a thumbs up. Is my voice clear? Guys, अब तक जो बताया है समझ में आया है, वॉइस क्लियर है? प्लीज गिव मी थम्स अप। क्लास के बीच में आफ्टर सर्टेन इंटरवल मैं आपसे पूछता रहूंगा वॉइस के लिए, सो प्लीज गिव मी अ बिट। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नाउ। Let me just rub this up. Okay. Question number one. A train 200 meter long is running at a speed of 36 kilometer per hour, takes 55 seconds to cross a bridge. What is the length of the bridge?
time is always equal to distance upon speed. Okay. Now, as you can see, distance is in meter, time is in seconds. So speed is also must be मीटर पर सेकंड. सबसे पहले इस 36 को 36 इंटू 5/18. So 18 to the 36, that is 10 मीटर पर सेकंड. पहले हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. नाउ टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड. टाइम क्या है? 55 सेकंड्स. डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. हमेशा याद रखिए, when a train cross a pole, a tree or a human, the distance, oh sorry, the length of the train is the total distance. But when a train crosses a bridge, a platform, any other train, okay, a tunnel, in those scenario, total distance is the length of the train plus the length of pole, oh sorry, tunnel, platform, bridge or any other train. So यहाँ पे हमें ट्रेन के साथ ब्रिज दे रखा है, इसीलिए लेंथ द ट्रेन 200, ब्रिज की लेंथ मान ली x अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लाई 550 is equal to 200 plus x. So answer is 350 is equal to x. So अगर कोई पूछे what is the length of bridge is 350 meters. Okay, let's go on with question number 2. A train 250-meter long takes 30 seconds to cross a man running at a speed of 6 kilometers per hour in the direction opposite to that of train. What is the speed of train? Again, basic formula is time is equal to distance upon speed. क्योंकि यहाँ पे ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है, तो मैन का जो डिस्टेंस है उसे कंसिडर नहीं कर रहे कहेंगे. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 250. अब यहाँ पे केस आएगा रिलेटिव स्पीड का. नाउ इट इज 6 किलोमीटर पर आवर. लेट अस से द स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माननी? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो आपका टाइम है वो सेकेंड्स में. तो हम क्या करेंगे x, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी x प्लस 6. और ये डिस्टेंस स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर आवर में करना, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ अगले स्टेप में वी कैन राइट 250 इंटू 18 ऊपर चलाएगा अपॉन x प्लस 6 टाइम्स 5 is equal to 30. 0 से 0 cancel out. 3 6 are 80, 5 5 are 25, 6 5 are 30 is equal to
x plus 6. So x is equal to 24 kilometer per hour. So the speed of train is 24 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. बेसिक कॉन्सेप्ट वही था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बट जैसा कि दिख रहा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस और टाइम मीटर और सेकंड में. तो हमें पूरी कैलकुलेशन मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी. इसलिए हमने कहा लेट अस से द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड ऐड होगा 250 अपॉन x प्लस c. ये पूरा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर मीटर पर सेकंड में किया. एंड वी हैड आवर आंसर. ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए. लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन. A train 160 meter long passes a standing man in 25 seconds. Now, since a man is not moving, so there is a no case of relative speed. यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 160 अपॉन 25. क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, इसका मतलब होता कि हमारा ये जो वैल्यू है ये तो मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि मीटर था, सेकंड था. इसको किलोमीटर पर करने के लिए इंटू 18/5 करना पड़ेगा. सो लेट्स कैलकुलेट 160 into 18 upon 125. The answer is 23.04 kilometer per hour. So the closest value is 23 kilometer per hour. That's the answer. Okay. Again, is my voice clear? Okay, before we move ahead, is my voice clear? Okay, let's continue. Question number 4. A train 350-meter long takes 35 seconds to cross a man running at a speed of 5 kilometers per hour in the direction same to that of train. What is the speed of train? Now, दो चीजें यहाँ पे भाग रही है, एक ट्रेन और एक ह्यूमन, और दोनों ही चीजें एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं. तो रिलेटिव स्पीड विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड्स. डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में.
स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकंड, पर यहाँ किलोमीटर पर आवर में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है 35, डिस्टेंस 350 अपॉन स्पीड है मैन की 5, ट्रेन की। तो इतना तो हम कॉमन सेंस से कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड मैन की स्पीड से ज़्यादा होगी, इसलिए एक्स माइनस 5। क्योंकि किलोमीटर पर में तो मीटर पर सेकंड में कहेंगे 5/18 करना पड़ेगा, और 18 ऊपर आ जाएगा। नाउ 35 10 सा 50, 5 2 सा 10, 18 2 सा 36, बस x minus 5 is equal to 37. So x is equal to 41 kilometer per hour. Option B. Speed, time, distance में 90% क्वेश्चन ट्रेन रिलेटेड आएंगे, so not to worry about it. बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। Okay, let's move on with question number 5. Stopping train base question. Without stopping, the speed of train 120 kilometer per hour. With stopping, the speed of train 50 kilometer per hour. Find the stop time of the train. फॉर्मूला यहाँ पे stop time is equal to difference in speed upon speed without stoppage. So difference in speed 120 minus 80, that is 40, and speed without stoppage is 120. So the answer is 1 upon 3 r. 1/3 r को हमें मिनट पे करना है। एक आवर में 60 मिनट्स होता है। 1/3 into 60 minutes. The answer is 20 minutes. I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक फॉर्मूला, write it down. Stop time is equal to difference in speed upon speed without stoppage. Okay.
Let's move on with question number 6. Now there are two trains approaching each other at a speed of 20 and 24 kilometer per hour respectively, and they are at a distance of 240 kilometer. After how many hours will they meet? So hours they will meet is equal to distance between them upon sum of the speeds. Sum of the speed इसलिए बिकॉज दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं. 240 अपॉन 20 प्लस 24. अब यहाँ दिमाग अब नहीं चलाना. डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में. सो आपका टाइम जो आएगा वो भी आवर में. अगर ये मिनट्स में होता या सेकंड्स में होता तो जो आपका आवर में आंसर आता है उसे हम सेकंड्स में या मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 240 अपॉन 44. So the answer is 5.45 hours. That's option number D. Okay, now let's move on with question 7. A train 120-meter long passes an electric pole in 6 seconds. How long will it take to cross a bridge of 240-meter long? Train वही है, length of train upon time taken to cross a pole. Time will give you speed. यही same speed होगी when this length of train or a train of length is crossing a bridge. Time, time, right? इन दोनों सिनेरियो में स्पीड जो है वो सेम होगी. ठीक, यहाँ पे टाइम टू क्रॉस पोल है और यहाँ टाइम टू क्रॉस ब्रिज है. तो ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह से रहा हूँ. अगर मेरे को एग्जाम में था मैं डायरेक्ट ये करता. ठीक है, इसे समझा रहा हूँ इसीलिए मैंने इस तरह से दो इक्वेशन बनाई है जहाँ पे एल एच सेम है. दोनों स्पीड डिफाइन कर रहे हैं. किसकी स्पीड? ट्रेन की. तो दोनों के आर इक्वेट कर लो. दैट मीन्स 120 अपॉन 6 इज इक्वल टू 120 प्लस 240 अपॉन x. This implies 120 upon 6 is equal to 360 upon x. 120 threes are, so x equal to 18 second. Your answer. Okay, क्योंकि दोनों टाइम में ट्रेन की स्पीड ही होगी और स्पीड ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही होगी, इसीलिए दोनों सिनेरियो में आर एच वो आर एच एस को इक्वेट कर दी. आंसर.
Okay, before moving to question number 8, is my voice clear? Give me a thumbs up if my voice is clear. Guys, can you hear me? Okay, let's move on with question number 8. ये सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही होगा. Let's check it out. Train a 120 meter long and crossing a platform double its length. So speed is equal to distance of train, length of train plus length of platform. So 120 plus 240 upon 30. So the answer is 360 upon 30. But here's the thing, ये मीटर में है, ये सेकंड्स में है, तो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड सेकंड में है, और हमें ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में. सो 18/5 करना होगा. So 12 into 18 divided by 5. So the answer is 43.2. And closest option is 43. Correct. Now let's move on with to question number 9. ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है. A 1 kilometer long wire is held by n number of poles. 240 प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है that the platform is double its length. तो इट्स मतलब ट्रेन की लेंथ का डबल है. तो ट्रेन अगर 120 है, 120 का डबल 240 होता है.
तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है वो 360 मीटर इन 30 सेकेंड्स. Now let's move on to question number 9. So as it says, एक किलोमीटर के बार में n नंबर ऑफ पोल्स लगाएगा और तो जो टोटल गैप देन n पोल जो गैप है वो होगा 1000 अपॉन n -1 का. पर एक पोल हटा दिया गया. सो व्हेन n -1 पोल्स तो जो गैप है वो होगा 1000 अपॉन n -2 का. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी 1000 अपॉन n -2 माइनस 1000 अपॉन n माइनस इज इक्वल टू जो गैप था वो हो गया डिफरेंस है 5.3. Guys, solve this equation and tell me the answer. पेपर इजी होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा उतना. डोंट वरी. बस इतना मेक श्योर कर दे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन. इवन अगर आपको गेस भी मारना है सो ट्राई टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन. उसके बाद रिमेनिंग 2 गेस मार सकते हो. लेकिन जिस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन और आप एलिमिनेट नहीं कर पाए चारों में से गेस मारना उसको लास्ट में करेंगे. It is OMR based, so please it's a humble OMR अच्छे से भरिए. OMR भरने में कोई गलती नहीं. 200 मार्क्स का पेपर है. Anything above 120 is okay, fine. You will get a regular seat within the campus. Try to make sure you must score anything above 120. Okay, let's move on with question number 10. Sorry, पहले इसका आंसर बताइए. I got 1000 कॉमन ले. अब तक इसने सॉल्व नहीं किया. 5 से गया. That becomes 200. 200 into 3 becomes 600. 600 LCM is n-1 n minus 2. ऊपर आएगा n minus n minus n plus 2 is equal to 1. n कट गया
2 में 7 गया 1. So 600 is equal to n minus 1 into n minus 2. Now, क्या हमने इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए? मैंने आपको बताया था, instead of making quadratic, try to convert 600 into the product of consecutive numbers. So 25 4 is 100, 25 2 is 50, 10 600. Yes. So I can write 25 into 24 is equal to n minus 1 into n minus 2. So n minus 1 बड़ी वैल्यू, इसको 25 से कंपेयर कर लो. So 25 is equal to n minus 1. So n is equal to 26. So how many poles are initially? The answer is 26. I hope this question is clear. इतना difficult question, chances कम है आने. Okay, let's move on with next questions. P starts chasing Q 3 hours after Q starts singing. He takes 4 hours to catch Q. If the average speed of P is 35 km per hour, find the average speed of Q. Now, let's make a visual scenario of this question. This is Q running at a certain speed. ठीक है? Now, this is P. You start 3 hours after Q started running. That means अगर मान लीजिए थ्री क्यू ने यहाँ शुरू किया 3 घंटे में, क्यू मान लीजिए यहाँ पहुँचे, और जब क्यू यहाँ पहुँचा, then P started chasing him, right? But then again, it took P 4 hours to catch Q. That means Q 3 घंटे पहले है, तो यहाँ पे था. That means with the initial first 3 hours, the gap between P and Q already was created. Now, after 4 hours, Q was her and so was P. Okay, now it took 4 hours to catch Q. That means distance
in 4 hours. That is speed into time. That is 140 kilometers. So total distance covered by P to catch Q is 140 kilometer. This distance was covered by Q in how many years? अगर ये पता लग जाए हमारा आंसर आ जाएगा. Now, P took 4 hours to catch or Q started run 3 hours before. So total time taken by Q to cover this distance is equal to 7 hours. 4 hours this and 3 hours earlier. So Q का time है 7 hours. That is 3 plus 4. Distance 140 kilometer. So speed of Q is equal to 140 upon 7. That's 20 kilometer per hour. Option number C. देखने में कई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं बट होते नहीं है. Okay? So don't get panicked when seeing these other questions. थोड़ा सा फोकस और आंसर आ जाएगा. Okay, let's go with next question. Question number 11. Naki rain traveled 1200 kilometer by air, which is 2 by 5 of history. One third of the trip we traveled by train and rest by car. Find the distance traveled by car. Okay, so 1200 kilometer is 2 by 5 of a trip. So total trip cut is x kilometer per hour. Sorry, x kilometer. So 2 by 5 of x is 1200. X equal to 1200 into 5 by 2. That is 3000. 3000 is the total distance. जैसा पेपर मॉडरेट लेवल का होगा with 60% क्वेश्चन डुएबल, 40% क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना. ठीक है, उस 40 क्वेश्चन में परसेंट में अगर आप उसका आधा भी कर लेते बहुत अच्छे से, यू आर थ्रू. ओके, सो नो नॉट टू वरी अबाउट इट. पेपर कैसा सा आएगा ये सोचने से बेटर है अपनी तैयारी पे फोकस करें. ओके, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा. मे बी जस्ट अ डे. जस्ट फोकस on practicing questions. Okay. So there are 3000 kilometer is the total distance. One third we travel by train. So 3000 का one third हो गया 1000. So ट्रेन से 1000 किलोमीटर, एयर से 1200 किलोमीटर. टोटल कितना होगा 2200. सो रेस्ट बाय कार. तो कार से कितना 3000 minus 2200. That is 800 kilometer. Option number B.
Okay, let's move on with question number 12. A 180-meter long train crosses another 270-meter long train in opposite direction in 10.8 seconds. A shorter train crosses 5 in 12 seconds. What is the speed of longer train? Shorter train, the 180-meter mile. The speed is equal to 180 upon 12. That is 15 meter per second. तो किसकी स्पीड है शॉर्टर ट्रेन की ठीक है स्पीड ऑफ द शॉर्टर ट्रेन नाउ हमें निकालना है स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन सो टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं रिलेटिव स्पीड ऐड होगी so time is 10.8 is equal to 180 plus 270 upon 15 plus x. So 10.8 is equal to 3 upon 15 plus x. 9 से काट सकते हैं 1.2 और 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखेंगे हो जाएगा आपका 18 plus 1.2x is equal to 50. So 1.2 x is equal to 50 में से 18 माइनस करेंगे that's 32 then इस 32 को 1.2 से डिवाइड करते हैं अभी जो स्पीड है ये आई आपकी मीटर पर सेकंड में जितने ऑप्शन किलोमीटर पर आवर सो 18/5 सॉरी and the answer is 96 kilometer option number B. Let's move on to the last question.
Question number 13. Train A crosses train B. Train B is a stationary train. That means it is not moving in 50 seconds. And a pole in 20 seconds with the same speed. Length of train A is this. What is the length of train B? The speed remains same. So 240 upon 20 is equal to 240 plus length of stationary train bx upon 50. 0 0 cancel out. 120 125 is 600. X is equal to 60 meters. So with this, we have completed the concept of speed, time, and distance. Yeah. I hope guys मुझे concept clear हुए. And please आप questions की practice करिए. And कोई भी question में अगर doubt हो तो on my channel you can find the link of my Instagram, my YouTube, obviously, and you can text me there. We will help you with the question. So that's it for today. All the best for the papers and do well.